What's up, everyone? Or Aj, as already in the teaser you have seen, we have got someone very special with us, none other than Karan Singh Magic. Eventually, Karan had time to check out our DM on Instagram and was very active to respond as well. So, Karan is a magician, as you already know. He's a mentalist, and also the biggest part which he's wearing right there is he's a Chelsea fan. So, Karan, how's it going, man? गुड मैन वेरी गुड आई एम फुल ब्रांडिंग चेल्सी वगैरह करके सब करके आया मैं ताकि अगर कोई चेल्सी से देखे दे नो दैट माय लव फॉर द क्लब इज रियल इट्स नॉट जस्ट फॉर सोशल मीडिया. So Karan, we have already, so we're going to talk about your recent Instagram post, which is about Chelsea. So, but just before we come to that, थोड़ा सा हमें अगर debrief मिल पाता कि मतलब how eventually the journey eventually started. I know it's your second trip, उस बारे में भी बात करेंगे, but how did the journey start? ट्रिप्स काफी हो चुकी हैं टू चेल्सी. Okay. Do you mean what journey do you want to know कि मैं चेल्सी फैन कैसे बना? पहले journey जो अभी पहले journey, how did you eventually fell in love with the club? Like what was that point? I'm a fossil. How old are you? 27. 27. So मैं 30 साल का हूँ, तो मैं 3 साल बड़ा हूँ जैसे. एंड आई थिंक जब मैं 7 या 8 साल का था 98 99 ये मैंने चेल्सी के मैच डे लाइफ पे भी बोला था. तब इंडिया में स्टार स्पोर्ट्स और ESPN पे फुटबॉल आना शुरू हुआ था एंड तब सारे मैचेस नहीं आते थे, बहुत कम मैचेस आते थे. तो ऐसे ही मैं एक बार चैनल्स फ्लिक कर रहा था एंड उस पे एक एपिसोड आता था गोल्स करके एंड उसमें देयर वाज अ फ्री किक दैट आई रिमेंबर जैन फ्रैंको जोला ने ली थी. वो बॉल बिल्कुल ऐसे डिप करके अंदर फ्री किक की तरह अंदर गई थी एंड आई सॉ यार ये तो बड़ा कूल बंदा है. एंड आई स्टार्टेड सपोर्टिंग चेल्सी बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ जैन फ्रैंको जोला. और तब छोटा था यार, 7-8 साल का, तब तो पता नहीं होता था क्या सपोर्ट होता है, क्या करना होता है. धीरे धीरे आई स्टार्टेड whenever I found time I started watching football and luckily tab obviously Chelsea won. They were in the Champions League and everything, but they were like a mid-table team at that point. They were fighting for top 4 वाला. तो जब भी मैच देखता था coincidentally जीतती थी and it just became a thing where I just started supporting them and yeah it's just grown over the years. और तभी eventually तभी actually मैं Roman Abramovich era also started in Chelsea, you know. That is when the era started. 2003 it started and now it's ending unfortunately. So okay, so we are going to talk about that part as well. I know बहुत सारी चीजें हैं जो बात करनी है, but okay, now let's just talk about आपके अभी recent Instagram post और YouTube वीडियो के बारे में which was about Chelsea. So just tell me like वो कैसा हुआ, मतलब how did it happen and the story behind those posts. I mean meeting Peter Cech as well. I saw one of the posts where you're meeting Peter Cech. Yeah. Who's a Chelsea, and I just want to correct and put it out, and an Arsenal legend, let's say. Arsenal legend. I mean, Arsenal legend is slightly. He played both seasons. वहां पे जाके उसने चेल्सी के अगेंस्ट गोल पड़वाए हैं काफी सारे, तो he was still a Chelsea legend even while at Arsenal, and his heart beat blue. Yeah. So I think I'll tell you how it happened. तो मैंने चेल्सी के साथ obviously during the pandemic when they got in touch initially to एक उनका होता था चेल्सी के सुपर फैंस करके, they do a podcast with Arjun Kapoor who hosts it. तो Arjun Kapoor interviewed me about my journey with Chelsea. तो मैंने वो करा था and I thought that would be the end of that. It will be a one-off thing, but it kept happening. They sent me this jersey when we won the Champions League. Huh? No, nothing. Continue. Sorry. They sent us this jersey when we won the Champions League. And उसके बाद एक दो चीजें और करी, मॉडल के साथ फीफा खेला, ये सब कुछ था. And I was going to be in London for work 15th February से लेके 21st February. तो मैंने बस पूछा था कि obviously जिस टाइम पे मैं लंदन में हूँ तब चेल्सी का क्लब वर्ल्ड कप चल रहा था and I assumed कि टीम होगी नहीं. तो मैंने बोला कि if I can just get a stadium tour which I can vlog, मैं उसी में बहुत खुश था कि मैं स्टेडियम टूर करूंगा, मेरे को बस एक्सेस दे दो कि मैं व्लॉग बंद कर पाऊं, सारा कोई रोके ना मेरे को व्लॉग करने से. दे सेड कि यार 22 सेकंड को चैंपियंस लीग मैच है, तो अगर आप रुक सकते हो तो आप वो भी देख लो. अगेंस्ट लिल. हाँ, तो उन्होंने बोला चेल्सी वर्सेस चैंपियंस लीग, अगर आप रुक सकते हो तो देख लो. अच्छा रुक सकते हैं तो मैच भी देख पाएंगे. ये सामने से पूछा, मतलब आप तो खुद पूछा उन्होंने. मैंने कहा ये तो मैं चलो ठीक है. हाँ, वो बस चाहते थे कि मैं आगे मैच देखूं. मैंने बोला चलो ठीक है, मैच देखने के लिए बुला रहे हो, चैंपियंस लीग का मैच है, लेट मी ट्राई टू. और अभी हम चैंपियंस ऑफ यूरोप भी हैं, सो इट बी अ ग्रेट आइडिया टू वॉच इट. करण जस्ट वन सेकंड, करण जस्ट वन सेकंड. ये जो चीज हुई, ये मैजिक से हुई थी आपके या ये खुद से हुआ? लाइक आई वांट टू नो दिस बिकॉज़ ऐसे सामने से ये खुद हुआ ब्रो. मतलब मैं तो इमेजिन चेल्सी डीएमिंग यू सेइंग कि भाई
तुम अगर यहाँ पे हो तो मैच भी देख लो हमारे साथ, ये तो हाँ ये मैजिक है, दिस इज करण सिंह दे मैजिक सेड एक्चुअली। मैच इंटरेस्टेड, ओके कूल मैच देख लेते। तो फिर मैंने अपना ट्रिप एक्सटेंड कर लिया, मैंने बोल दिया कि ट्रिप एक्सटेंड कर दिया, बता देना मैच के लिए कितने बजे आना है, क्या करना है। उन्होंने बोला सुनो हमने आपको सिर्फ मैच दिखाने के लिए नहीं रोका यहाँ पे, अगर आप यहाँ आए हो तो थोड़ा काम भी करोगे। लाइक ओके क्या काम करना है? सो द काम वाज दैट दे गेव मी चेल्सी का इंस्टाग्राम फॉर द डे एंड वो I have seen some दे of those stories. I have seen some of those हाँ तो stories. उन्होंने मेरे को पूरा दिन ऑन द चैंपियंस लीग डे आई हैड एक्सेस टू चेल्सीज इंस्टाग्राम एंड आई हैड टू पोस्ट स्टोरीज ऑफ माय डे एज अ चेल्सी फैन। एंड वो मुझे बहुत लोगों ने पूछा डिड यू रीड द एडमिन्स माइंड एंड फिगर आउट द पासवर्ड टू चेल्सी इंस्टाग्राम एंड आई डिड, व्हिच वैसे आई कैन नाइदर कंफर्म नॉर डिनाई। इस मीट कॉल के बाद प्लीज आप वो पासवर्ड अगर साइड में अगर फॉरवर्ड करना है तो कर देना, हम भी थोड़े टैकल फ्रॉम बिहाइंड से मीम्स पोस्ट कर देंगे। बट मिला कि नहीं मिला पासवर्ड? मिला कि हाँ नहीं नहीं, फिर मिला? उन्होंने वो कराया मेरे से पूरा दिन। दे मेड मी पोस्ट फ्रॉम चेल्सीज इंस्टाग्राम एंड देन दे गॉट मी पिच साइड। मैं बिल्कुल पिच पे खड़ा हुआ था यार, स्टैमफोर्ड ब्रिज पे। मैं I चल saw क्या रहा है, मैं तो मैच देखने आया हूँ, आपने मेरे को पिच पे खड़ा कर दिया है। देन दे गिव मी अ जर्सी जो भी धुलने गई हुई है, व्हिच हैज द क्लब वर्ल्ड कप 19, बैज करेक्ट। एंड हैज माय नेम विद द नंबर 19 बिहाइंड मी, एंड व्हिच वाज जस्ट सरियल यार। और उसके बाद फिर आई डिड मैच डे लाइव जो उनका उसके बाद प्री मैच शो प्रेजेंटेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन नहीं हुई आपका जर्सी के बाद? प्रेजेंटेशन होता। सेरेमनी। हर्षा भोगले आएगा कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी है, नहीं वो नहीं हुआ। उन्होंने मेरे को मैच डे लाइव जो होता है उनका स्टूडियो में चेल्सी टीवी का, वो कराया मेरे को, वेयर वी स्पोक अबाउट माय जर्नी विद चेल्सी। और उन्होंने बोला एक ट्रिक करो, वी डिड समथिंग which is now on my YouTube channel Karan Singh Magic, go check it out। तो मैंने वो डाला I'll put the link. yeah, उसके बाद हम निकल रहे थे वहां से and Ben, this guy who handles I think social media for all of Chelsea, Ben Harris, who was very very kind, he came up to me and he said Petr Cech is inside, do you want to meet him? मैंने बोला ये कैसा सवाल है? Do you want to meet? मैं क्या बोलूं? बेहुदा नहीं, सवाल अभी है। मंगलवार को पूछना, मंगलवार को शायद मैं मिल लूं, आज नहीं मिलना चाहता मैं। मैंने बोला ऑब्वियसली आई वांट टू मीट हिम। पेटर चेक को पूछ रहे हो कि मिलना चाहते हो कि नहीं? ऑब्वियसली मिलना चाहता हूं। So I met Petr Cech and it was a very short conversation with him I had, and then I left and then we saw the match, which was How tall is he? incredible. Like I just want to know, like he's tall, right? He's very very tall. He's very tall यार। मेरे को usually I mean मेरे flex नहीं है मेरे, I'm fairly I think for an Indian man I'm decently sized, decently tall, I'm 6 feet 1.5 inch। तो Yeah, मेरे आसपास that's मैं more किसी than से yeah. फोटो खिंचाता हूं, मुझे तो फील बड़े आती है कि दिखते भाई हैं मैं हाँ। लंबा Even I'm छोटे 6 हैं। and I look थोड़ा मतलब ठीक है, decent 6 feet is okay से हाँ, मतलब बोलने वाला हूँ, but पेटर चेक साइड में मेरे खंबा लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किसके साथ फोटो खिंचा लिया मैंने। 6'5" के आसपास होंगे, 6'4", 6'5", 6'6", yeah. Yes, he was 3-4 inches taller than me and he was incredibly kind. जो मेरे साथ टीम थी उन्होंने भी बहुत ही एक्साइटेड होकर फोटोज खिंचवाई पेटर चेक के साथ, which was incredible यार। And then we saw the game, the atmosphere was insane because Champions League happening under lights, home game, and we scored very early. It was a very and Club World fast Champions, start. Club बहुत ही World सही Champions, atmosphere हुआ पूरे मैच में। तो और वो भी Club Club World World Champions, Champions, yes, that's the bragging rights. if I'm wrong, bragging rights exactly. If I'm I could be wrong. I think Brighton के game against जो हमारी थी was that home or away, I don't remember. 19 February को जो हुआ था, I don't remember if it was home or away. So I think this was the first home game as champions of the world. First home Champions League game for sure as champions of the world, which I saw, which was incredibly fun. And of course अभी भी डिफेंडिंग चैंपियन तो है ही चैंपियंस लीग के, तो मतलब हाँ, वो तो क्लब वर्ल्ड चैंपियंस भी प्लस हैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड। वाह वाह वाह। champions. So wow, I mean that's like I think that's the journey, like I mean every Indian और I think सारे वर्ल्ड के जितने भी चेल्सी फैंस होंगे, और as a football fan also everyone would I mean would maybe want to live one day, but you lived it through. I mean मतलब हम सब में से तो like I feel very jealous अभी ये स्टोरी सुन के, like I wish I could have been done the same. So maybe अगर पेटर चेक का नंबर अगर चेल्सी एडमिन का नंबर ना भी हो तो पीटर चेक का नंबर अगर बात किया हो 2 मिनट के कॉन्वर्सेशन में तो मेरे को भेज देना। यार पता है वहां पे चेल्सी का एक और चीज है, ली पाकर, हु इज बेसिकली द वॉइस ऑफ चेल्सी। स्टेडियम अनाउंसमेंट्स करते हैं वो, ही इज ऑन चेल्सी वेरी रेगुलरली, ही डज अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, ही वाज इनक्रेडिबल। ही आस्क्ड इफ आई कैन डू अ ट्रिक ऑन हिम एंड ही शॉट इट एंड ही अपलोडेड टू हिज इंस्टाग्राम, और उस पे पहला लाइक पेटर चेक का आया था। तो मेरे दिमाग Petr Cech ने देखा है वो। So Petr Cech has seen it. He's followed by Drogba, Lampard. So I'm assuming they've also seen it. तो कहीं ना कहीं मेरे बचपन के सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं मेरे को भी।
That's amazing. That's amazing. So I think अब ये तो थोड़ा डिस्कशन हो गया हमारा आपकी जर्नी का, और जो भी हैप्पी हैप्पी टाइम्स अभी सिर्फ कुछ हफ्तों के थे, बट आफ्टर लाइक 22 के बाद थोड़े दुख भरे दिन की भी बातों की अब थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ा दुख बांट लेते हैं. सो द मेन हाँ अभी टॉकिंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ द लाइक चेल्सी फैंस, तो मतलब स्पेशली सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी को वॉर से, आई मीन इट्स अ ग्लोबल लेवल पे, तो इट हैज अफेक्टेड अ लॉट ऑफ सबसे ज्यादा lives लॉस तो and नहीं भाई, सबसे everything, ज्यादा but in football losing। I think सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी को हुआ है तो वो चेल्सी फैंस के लिए हुआ है, because eventually Roman Abramovich who tried to save वाया, मतलब उन्होंने अपनी कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करी चेल्सी फाउंडेशन के थ्रू, शायद वो अपना कंट्रोल और रख पाते, बट एज द करंट सिनेरियो स्टैंड्स उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है, एंड ही हैज पुट आउट अ स्टेटमेंट कि अब वो क्लब को बेच रहे हैं. सो करण, आई वांटेड टू नो योर थॉट्स मैन. मतलब 19th को अगर बात करके आए थे क्या कुछ इससे पहले, या कुछ मैजिक करके आए थे क्या वहां पे जो गलत चला गया डॉक्टर स्ट्रेंज की नहीं तरह, भाई, और मेरी डॉक्टर गलती नहीं स्ट्रेंज की है। तरह गलत गलत हो गया वो नहीं, द मैजिक वेंट रॉन्ग. मेरी वजह से क्लब नहीं बिक रहा So है, how, इतनी yeah. बड़ी पनौती नहीं हुई। So yeah, It's very sad, man. Like, I mean, I think, and firstly, of course, whatever's happening in Russia and Ukraine is really, really sad, and my heart goes out to people of Ukraine who are being invaded upon, and it's just really sad whatever is happening. Roman Abramovich, of course, has been a blessing to Chelsea because वो एक ऐसे ओनर हैं जिनको मजा आता है. He's a fan before he's an owner. correct. तो ही someone who goes, अगर वो लंदन में होते हैं, he goes for under 8 Chelsea matches, under 9 Chelsea matches, under 14 Chelsea games. So it's not just that he's there for the big games. He's the biggest अगर वो supporter है, of the club. Yeah, he's the biggest he's the supporter of the biggest club. supporter of the club. Yeah, Yeah, and the owner see, as there well. Yeah, and the owner as well. He's saving, like when Petr Cech saved the penalty in 2012 against Arjen Robben. There is this incredible video of yeah, Roman we all Abramovich have just seen doing it. this. Yeah, He saves it. It's incredible. even after Club वो, World Cup, even after Club World Cup, he yeah, was there. even after the मतलब, Club World even Cup, after the Abhi, club. Yeah, exactly. yeah. And he's sitting in the stands, and you can see जब भी बॉल हवा में होती है, he's doing the headers क्योंकि बॉल अंदर Yeah. चली जाएगी. So he's the number one Chelsea fan for sure. So it's very, very sad that he's going to leave because of And he's the political biggest Chelsea fan also, because whenever the manager is not performing well, तो सबसे पहले sack भी वही करते हैं within 3 दिन के अंदर छुट्टी. So I think I completely agree to this point. As a fan only, he watches the game. Manager he support नहीं watches the किया, game as a fan. rather than tweeting, he just directly does take the decision कि भाई मेल लिखते हैं सीधा. Before people start tweeting aloud, Yeah. sack हो चुका होता है. And yeah, I think it is sad that he's leaving, especially for political reasons. अगर और कोई reason होता समझ भी आता. But I mean, yes, ये भी समझ आ रहा है कि क्यों हो रहा है. But it should be like this because I think as more often than not, I think people are more peace loving than war loving, and that's majority of the world. So the reasons for leaving are very sad, and that has a profound impact on the club. Correct. And पता नहीं है कौन लेने वाला है. बहुत सारे rumors हैं कि there's a Turkish person, then there is Sir James Ratcliffe, who's the richest person in Britain. Then 2-3 और हैं. 86-year-old है. There are some American people who are interested, which I don't Hope know. they don't come. Hope the Americans don't come. Like, yeah, you know, I mean, Liverpool's run by Americans, and I think they're doing a fairly decent job. तो okay, देखते हैं. Liverpool fans I will mean, definitely not agree to this, but anyways, it's ठीक है. We'll keep that conversation. सारी बातें आज नहीं करते. ठीक है. Yeah. but let's see what happens, man, because I think अभी तो काफी uncertainty है. I think in the next week or two we'll find out what's about to happen. And at the time of shooting this, while we're doing this, is just 3-4 hours before the Chelsea game, which I think might be the last game of the Roman Abramovich era at Chelsea. So Chelsea versus Burnley आज रात को. And yeah, I hope that whoever takes over the club, they have the same amount of love. If not the same amount of love, at least some amount of passion for the club, and they don't just take it up as a business project. Because if you take it up as a business project, then you become Manchester United. And I mean, it was not a business project, because eventually the statement that was issued by Chelsea Football Clubs, मतलब with Roman also, that he forgot 1.5 billion. मतलब इतने में तो clubs बिक जाते हैं, you know, like that is the amount of इतने में clubs बिकते हैं, and he is just letting all of that amount just go. He doesn't want that. The statement, which it's a very emotional and a very good statement by, like, even like I support, like even if I support, let's say, some other club, and if I read a statement by owner like that, you know, और उसमें वो ये सब चीजें बोल रहे हैं कि it is never about the money, and it's a very emotional letter, like ऐसा भी कुछ नहीं है. And he's
and not just words, he's actually doing it. So that's Correct. eventually, I think it's a blessing. Correct. So That's true. yeah. So Karan, now I want to ask you isse bhi ek level ka aage ka question. Now what's next for Chelsea? What do you think, like after, like I just wanted to know your thoughts ki post Abramovich era, what do you think, what will happen? Because I think I just can't remember the name of the chief जो आपके transfer, the one Marina. who yeah, उनके भी कुछ ऐसे Yeah. मैंने ऐसे कुछ news आ रही है कि she might leave and she's one of the best in the business. So what do you think Yeah. is the post Abramovich era? Like I know अब तो आप तो पेटर चेक यार, लेके I आए हो, तो think- आई नीड टू नो थोड़ा बहुत तो इनसाइट दे सकते हो आप. माइंड रीड करके बताओ. माइंड रीड करके आए हो, ऑफ कोर्स. I think the core group of Chelsea players right now is very, very strong. Thomas Tuchel, I think, is a fantastic manager. Agar aap unki press conferences suno since this news came out, they have been brilliant. They've been on point, and some of the things he said are phenomenal. So I think going forward, as long as I trust the manager, I trust the players. That yes, the board is important. The way the club is run is very important. Which is why it's important that the owner, like I said, is passionate about the club and it's not taking it up as a business project. So वो अगर जब आते हैं, अगर ऐसा होता है, I see only positives going forward because we are in a great position. We are the champions of Europe. We are the champions of the world, and we are still competing on all fronts. Correct. And अगर एक दो seasons हो सकता है थोड़ा, they might be slightly डामाडोल while people try to adjust because जब Roman Abramovich took over the club also, first couple of seasons were a little time to adjust. Yeah. You were trying to adjust with the new ownership and everything. So I think wo hoga, maybe a couple of seasons of uncertainty. But as long as it's this group of players and this manager and this team belief, and what Chelsea has always stood for is we've always had an incredibly passionate supporters group. We've always had a very क्या कहते हैं, gusto के साथ टीम हमेशा खेलती है जो भी हो, even if it's defending or attacking, whatever they do. I think as long as that ethos is maintained of Chelsea, I don't think much should change, and we should continue competing on all fronts like we have been for the last 2 decades. Okay, that's pretty much it from Karan. I know like nobody wants in, I think particularly Chelsea fan में तो कोई ऐसा चाहते नहीं थे कि वो जाए, but now this is what it is. This is what we are up to. So that's pretty much it from our side. And Karan, thank you for coming. Firstly, like इतना quickly आपने respond करा and you came on board. I'm just really मतलब आपके videos वगैरह भी हम लोग जो देखते हैं, it was amazing. Like few of वो जो trick भी जो you did it, मैंने जो video देखी आपकी, it was just amazing that मतलब इंडिया का म्यूजिशियन जाके वहां पे चेल्सी वाले फैन टीवी में भी जाके he is amusing people. So that's also मतलब one of our own is going there and making those things happen. It really feels like, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा. So thanks a lot Karan, thanks a lot for coming on the channel. And बहुत सारी बातें करनी थी, but अभी के लिए सिर्फ इतनी ही काफी हैं because I know you do play FIFA and all of the things as well, but we'll plan that some other time. So thank you Karan, thank you for coming on board. And this is me, Pranay, signing out from Tackle From Behind.